enables computers to perform a variety of advanced functions, including the ability to see, hear, and speak written language. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सिंपल है, जो एक मशीन को एक इंसान की तरह बोलने के लिए, सोचने के लिए और काम करने के लिए तैयार करता है, और बहुत सारे काम आने वाले टाइम में हमारी जगह पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है कर रहा होगा। So I want to tell you a little story. We were in Singapore a few months ago, and I had a blockchain. We had our blockchain event for Metha, and in the blockchain event, a lady approached me. She speaks Chinese. She didn't speak English, and she couldn't understand me. So I simply pulled out my phone. I have an app which is called Google Translate, and this app was able to translate her words and my words instantly. This is artificial intelligence, and this is the world we're living in. तो मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहती हूँ कि ये रियल वाकया है कि कुछ टाइम पहले जब टोकन 2049 सिंगापुर में हुआ, तो मैं वहाँ पे एक लेडी से मिली जिसको इंग्लिश नहीं आती थी, और उसको मुझे चाइनीज़ नहीं आती थी। उनको चाइनीज़ बोलना आता था, मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता था। तो मैंने एक ऐप को यूज़ किया जिसका नाम है गूगल ट्रांसलेट, और मैं वो ऐप के द्वारा वर्ड बाय वर्ड जो मैंने इंग्लिश में बोला उसने उसको चाइनीज़ में कन्वर्ट कर दिया, उसने जो चाइनीज़ में बोला इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। इसलिए दो अलग अलग जगह से होते हुए भी, दो अनजान भाषाओं के होते हुए भी हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर पाए, हम एक दूसरे के साथ संवाद कर पाए। Now, the most important, what is WEB3.O? WEB3.O, often referred to as disseminated web, is the next generation of the internet that aims to make data more meaningful and interconnected. Meaning, Web3.0 and Mcoin is future. तो वेब 3 क्या है? वेब 3 इंटरनेट का अगला दौर है। जिस तरीके से इंटरनेट बढ़ रही है उसके जरिए हम इंटरनेट के जरिए और बहुत सारे काम कर पाएंगे। यानी कि अगर मैं आपके बारे में बात करूं तो वेब 3 और मीथा भविष्य है। Now I'm going to share a video in English with you. This video you may or may not understand. However, you'll understand the pictures of the future that we're living today. So you will see what we're living today and where we will be in 10 years. अभी मैं एक वीडियो प्ले करने जा रही हूँ जो कि इंग्लिश में। हो सकता है वीडियो के शब्दों को ना समझ पाए, पर अगर फोटो को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह की दुनिया है जो हम अभी जी रहे हैं और कैसे ये दुनिया टेक्नोलॉजी के जरिए वेब 3 में भविष्य में बदलने वाली है। तो पूरा फोकस आप इस वीडियो पे रखिएगा, इन पिक्चर्स को देख के आप समझ पाएंगे। The world is rapidly changing thanks to AI and Web 3.0. In this video, we'll explore their impact on our lives. AI is everywhere from voice-activated assistants to personalized recommendations, making life more convenient. AI improves patient care, diagnoses diseases, and monitors health using wearable devices. Web 3.0's blockchain tech brings decentralized apps and NFT, offering digital ownership. Web 3.0 disrupts finance with DeFi platforms, making lending and trading accessible to all. AI and Web 3.0 collaborate to create self-governing systems like AI-powered smart contracts. The future promises innovation, connectivity, and boundless opportunities driven by AI and Web 3.0. The transformational power of AI and Web 3.0 is reshaping the world. Get ready for a future filled with possibilities. Wow, this is the future. This is where we're going. This is where we are. 30 years ago, we didn't have the internet. 30 years ago, we didn't have Web 1.0. 30 years ago, we didn't have Web 2.0. But now we have Web 3.0, and you're a part of the future, and you're a part of today. So there's no reason as to why you can't be a part of the future and build it through Web 3.0. वाओ,
तो ये है भविष्य। आज से 30 साल पहले तक हमें इंटरनेट का नामो निशान भी नहीं पता था, हम जानते भी नहीं थे कि इंटरनेट क्या है। मगर अब ना सिर्फ इंटरनेट 1 आया, इंटरनेट 2 आया, बल्कि अब हम वेब 3.0 के दरवाजे पे खड़े हैं, दहलीज पे खड़े हैं, जो कि भविष्य है। और आज जो कि आप इस जगह पे हैं, तो ऐसा कोई वजह नहीं है जिसकी वजह से आप वेब 3 में जाके अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते, बिल्कुल यही ही फ्यूचर है। Let me just explain to you what Web 1.0 was. Let's share Web 1.0, a little refresher. Web 1.0 was when the internet was launched. So we could only read information. Couldn't see, we couldn't hear, we could only read information. And that was a little over 30 or almost 30 years ago. Then what happened after Web 1.0 was Web 2. So we could create. Who here has Facebook? Put your hands up. Put your hands up if you've seen a video on YouTube. अगर आप YouTube पे कोई वीडियो देखते हैं, वीडियो डालते हैं, तो अपना हाथ ऊपर करें। Who here has WhatsApp? अगर आप लोग WhatsApp का इस्तेमाल करें तो हाथ ऊपर करें। Who here has Facebook? अगर आप लोग Facebook का इस्तेमाल करें तो हाथ ऊपर करें। Who here has Instagram? अगर आप लोगों के पास Instagram अकाउंट है तो एक बार हाथ ऊपर करें। This is what launched 1 decade ago, and everyone said it wouldn't work. सबसे पहले मैं आपको बता दूं वेब 1 क्या था। जब इंटरनेट आया तो एक अखबार की तरह था, हम उसको सुन नहीं सकते थे, उसमें कुछ डाल नहीं सकते थे, केवल पढ़ के आते थे। मगर वेब 2 में क्या हुआ, जब इंटरनेट आया, इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर, अब हम लोग उसके ऊपर अपनी वीडियो डाल पा रहे हैं, बातें सुन पा रहे हैं। मगर 10 साल पहले जब वेब 2 आया था तो लोगों ने बोला था ये बबल है, ये चलने वाला नहीं है, इसका कोई भविष्य नहीं है। अब वो चीज हम सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। If it wasn't for Web 2.0, you and me wouldn't be connected today. अगर वेब 2 ना आया होता तो आप और मैं साथ नहीं जुड़े होते, क्योंकि हम लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों से हैं। इंटरनेट और वेब 2 के जरिए हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए हैं। अगर वेब 2 नहीं होता तो हम लोग भी साथ में नहीं होते। So, yes. So, Web 3.0. Web 3.0. Web 3.0. What is Web 3.0 and how is Web 3.0 changing our lives? तो अब हम बात करने वाले हैं वेब 3.0। वेब 2.0 ने हमारी दुनिया को इतना बदल दिया है, तो किस तरीके से वेब 3.0 हमारी दुनिया को और हमारे भविष्य को बदलने वाला है, उसके बारे में हम बात करेंगे। Web 3.0, you can own. Who's here to make money? पैसा कौन कमाना चाहता है? Who's here to create a future for their families? अपने अपने परिवार का भविष्य कौन बनाना चाहता है? Most importantly, who's here to make passive money? सबसे इम्पोर्टेंट ऐसा पैसा किसको चाहिए कि आप चुतिया रहे हो और पैसा आ रहा हो? Yes, sir. Yes, partner. We're here to make money passively, which you can do with Web 3.0. Why? Because you get to own everything you build. There's no other industry that allows you to own an asset that you can't touch, you can't feel, and you can't see, except Web 3.0. And the most important is that you own it. Not a government, not a bank, not the politician, you, each and every one of you. तो वेब 3.0 के अंदर हम सब यहाँ पे एक इस तरीके की जायदाद बनाने के लिए आए हैं जिसमें हमारा अधिकार होगा, जो हमारे अधिकार में होगी, जो टेक्नोलॉजी के जरिए किसी और के पास नहीं होगी,
जिस पे मेहनत भी आपकी होगी, अधिकार भी होगा, ना सरकार का होगा ना किसी और का होगा, वो आपका होगा और आप एक ऐसी इनकम को बना पाएंगे कि आप काम करें या ना करें, वो ऐसे आपको पैसा दे रही होगी। और ऐसा दुनिया में किसी एक जगह पे हो सकता है, तो वो है वेब 3.0। So here we just have a little article. This article just shows how in 1995 when the internet was launched and everyone said it wouldn't work. You know, I remember back when we had, when my dad used to tell me a story of when he used to call his mother through a payphone. He had no mobile phone, he had no internet, he used to walk on the street, stop at the phone, put a coin in and call his mum in another country. Now, today, fast forward almost 30 years, we can FaceTime our family from India to Dubai to Australia to America to anywhere in the world. From Patna to Delhi to Mumbai, we can all use FaceTime. And this is what's happening and you will be a part of it and you will grow it and I'll show you how. मैं आपको ये पीछे एक स्लाइड दिखाना चाहती हूँ जो कि आज से लगभग 30 साल पहले की है। 30 साल पहले अखबार में छपा था कि इंटरनेट का कोई भविष्य नहीं है। और मेरे पिताजी मुझे हमेशा कहानी सुनाया करते थे कि मैं अपनी माता जी को कॉल करने के लिए बाहर जाता था और एक पे फोन के पास पीसी यूज करते थे, सिक्का डाल के फोन किया। मगर अब टेक्नोलॉजी के बदलाव के साथ हमें वो करने की जरूरत नहीं है। किसी भी वक्त पर हम अपने फोन को उठा के एक वीडियो कॉल कर सकते हैं और दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे हुए अपने दोस्त से, भाई से, बहन से, प्रियजन से लाइव बात कर सकते हैं। और ऐसे ही हम आगे भी और तेजी से दुनिया को बदलने वाले हैं। Now, I just want to give you some figures here today because when we make money, we want to see numbers. So let's talk numbers now and use the statistics. There is a total population in the world that's ever growing of 8 billion people. 8 billion people. Cell phone users, so people who use your mobile phone, put your hands up if you use a phone. अगर आप फोन यूज करते तो हाथ ऊपर करें और दो का यूज करते तो दोनों करें। Put your hands down if you don't use a phone. अगर फोन यूज नहीं करते हैं तो हाथ नीचे रखें, अगर यूज करते तो ऊपर रखें हाथ को। Put your hands up if you use the internet. अगर आप इंटरनेट का यूज करते तो हाथ ऊपर रखें। Put your hands up if you use social media. अगर आप सोशल मीडिया यूज करते तो हाथ ऊपर रखें। So this is the future. Each and every single person, look around each other. Everyone turn around. एक दूसरे को देखिए। Look. ये दृश्य है। Look around, अपने आसपास देखिए। Everyone has their hands up. We all use this. Now, active users for Web 3.0, 420 million in the last few years is grown that much. Web 3.0 has only had 420 million users. And the total population of the world is 8 billion. So who here thinks they have room to build their project? वो बता रही है कि एक नंबर की अगर बात करें तो दुनिया भर में 8,000 करोड़ लोग हैं। 8,000 करोड़ और उनमें से 7100 करोड़ लोग अगर हम अपने आसपास भी देखें तो फोन का इस्तेमाल करते हैं। मगर अगर हम वेब 3 की बात करें तो केवल और केवल 42 लाख लोग, ओनली 42 लाख लोग अभी वेब 3 पे हैं। तो 8,000 करोड़ में से केवल 42 लाख लोग वेब 3 पे हैं। तो कितना बड़ा स्कोप है हमारे पास अपनी लाइफ को क्रिएट करने का, कितना बड़ा स्कोप है हमारे पास अपने भविष्य को बनाने का। So I'm not going to go into too much detail here because Mr. Denise, our wonderful CEO, touched based upon the metaverse. However, we in our metaverse, we have multiple strands that add specifically to the metaverse that add value in building your project. So number one is DeFi, or DeFi as we call it, which is a decentralized finance, meaning you get to own, like we discussed earlier,
your coin, which is decentral finance, meaning the government doesn't own it, the politician doesn't own it, and the bank doesn't own it. It's your money and your money only. मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इस बात को नहीं करूंगी क्योंकि हमारे सीईओ डेनिस सर ने इसको बहुत अच्छे से कवर किया है, पर अगर मैं बताऊं कि मेटावर्स में और मीथर के अंदर हम क्या करने वाले रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, जिसमें पहली है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का मतलब है कि वो रुपया आम जनता का होगा, आपका और मेरा होगा, उस पर हमारा अधिकार होगा, ना कि किसी सरकार का। तो जिस तरीके से पीपल्स मनी वो लोगों का पैसा होगा और उस पर हमारा ही अधिकार होगा, दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, जो सबसे पहले है। So we also have DAO, we have healthcare data sharing, meaning we don't need pen and paper to hold the blood test anymore. We don't need pen and paper to see who's in hospital and who's not. We don't need pen and paper for a doctor to see us anymore. We have artificial intelligence that actually runs systems behind all this information. So it holds your data and it creates a smoother, safer and smarter program for you to exceed in the industry that you're in. Whether it's WEB3.O, whether it's any industry, you get to exceed through artificial intelligence. And most importantly, we also have it in supply chain management and personalized context recommendations. Now, I just want to ask you one question. I want to ask you a question. आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। I want to ask you a question. I still can't hear you. आवाज नहीं आ रही आपकी। Wonderful. The question I want to ask you is YouTube. How many people watch something on YouTube and how many times does YouTube recommend something else for you to watch? आप में से कितने लोग YouTube को देखते हैं और ऐसा होता है कि आप एक वीडियो देखते हैं तो उससे जुड़ी हुई रिकमेंडेशंस आपके पास आ जाती है कि आप ये वीडियो भी देख सकते हैं? ऐसा कितनों के साथ होता है? आवाज देके। This is AI. AI plays algorithms to do this, to recommend things, to online shop, to see the world from the comfort of your seat, all through something called your mobile phone. This is artificial intelligence and this is where Web3.O is going. यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक एल्गोरिदम का यूज करता है आपकी से जुड़ी हुई जानकारियों को स्टडी करके आपको वो इंफॉर्मेशन पहुंचाता है जो आपको चाहिए। Now, who here has heard of Tesla? यहाँ पे टेस्ला कंपनी के बारे में कितने लोगों ने सुना है? इलॉन मस्क, टेस्ला। You no longer need to drive your own car. Your car drives for you. अब आपको गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं है। अब एक ऐसी कार है जो खुद को चला सकती है, तो वाइफ को मायके लेके जाने के लिए आपकी टेंशन खत्म। This is the power of the future. I don't need to drive. I don't need to speak. I don't need to see. Everything is done for me. This is the future. This is what, it's not even future, we're living it. We are living it, but it's the start of the future, which means that if you exceed in this now and really, really take this opportunity that you have today and take it with your deepest, the deepest reason why in your heart, you will be able to build this and exceed in the next 10 years. Don't imagine today with the future. Imagine 10 years with the future and what you do with your future. तो अगर आप इस बात को आज समझें कि आज आपको गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं है, आज आपको कुछ और कहने की जरूरत नहीं है, अगर आप इस बात को आज समझ जाते हैं तो जरा सोच के देखिए जिस तरीके के 10 सालों में, पिछले 10 सालों में Web2 हम में से हर एक व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है, तो आज अभी इसी वक्त अगर आज आप यहाँ खड़े होके आगे के 10 साल देख पाए तो आपको अपना सुनहरा भविष्य दिखेगा। Now, just a quick one more slide will be robots. I mean, back in Australia and in Dubai, I was in Dubai last month, and I was in Australia last month, and we were sitting at a restaurant, and in the restaurant, we didn't have a waiter serve us. We didn't have people serve us. We didn't have humans serve us. In Australia, a robot serves us. In America,
a robot serves us. In the UK, a robot serves us. There's not me, there's not him, and there's not you. There's an actual artificial intelligence built robot machine that brings the food to your table. तो मैं ऑस्ट्रेलिया में थी और वहाँ पे मैंने एक रेस्टोरेंट में आके खाना खाया और वहाँ पे हमें खाना सर्व करने के लिए कोई इंसान नहीं आया, वहाँ पे एक रोबोट आया। ये सुन के मुझे ये समझ में आया कि जब बीवी शॉपिंग के लिए बोलेगी तो एक रोबोट जाएगा और मैं बिजनेस बिल्ड कर पाऊंगा। तो अब आपके जगह पर रोबोट भी ले सकता है। So, I can't even say it. This is the power of artificial intelligence, and this is the power of Web 3.0. A robot serves you, a robot speaks to you, a robot looks at you, and a robot can essentially look after you. And this is where the future is going. ये AI का भविष्य है कि अब एक रोबोट आपसे बात कर सकता है, एक रोबोट आपके बिहाफ पे काम कर सकता है, एक रोबोट आपका ख्याल रख सकता है, और यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जिंदगी के अंदर बदलाव कर रही है और ये भविष्य है। Now, I did say at the start of my speech that I was going to share with you how to make this a reality. This is a reality, but how do you make it a reality in your day-to-day life? Sadie, if you said to me, if I gave you a microphone today and someone said to me, Sadie, what does it mean for me? This isn't what it means for you. It means not just for you, it means for the community. Because once you change your life by taking action and executing, ये लाइट बंद कर, ये वाला लाइट ऊपर वाला बंद कर दीजिए, कम्युनिटी को परेशानी हो रही है। ये वाला लाइट बंद कर दीजिए, ऊपर वाली जो लाइट है वो बंद कर दीजिए। Now please, the next segment is the most important. The next segment will change your future, will change the people that you love's lives, and everyone that you deem see a future with will be the change in this. So please listen with me. बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब जो बातचीत होने वाली है वो डायरेक्टली आपके, मेरे, हम सबके भविष्य को बदलने वाली है। तो यहाँ से हमारी जिंदगी के अंदर टेक्नोलॉजी क्या बदलाव करेगी वो शुरू होने वाला है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। Number 1, learn the basics. Become a student again. If you really take Metha with your whole heart and you actually build Metha with everything that you own and hold sacred, which I can see you've done, given the community that you have here today, you will be able to change your life. But the first part is to actually learn the basics. Learn exactly what you need to take this everywhere you go, in every single action you take every single day in your life. तो अब टेक्नोलॉजी तो बदलने वाली है, भविष्य बदलने वाला है, पर इससे मेरी जिंदगी कैसे बदलेगी? तो अगर आप मीथर को दिल से लेंगे, दिल से करेंगे, तो आपका भविष्य बनेगा। पर उसके लिए सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा, बेसिक्स सीखने पड़ेंगे। अगर आप डेली बेसिस पे वो काम को सीखेंगे और उन कामों को करेंगे जो करने की जरूरत है, तो बेसिक्स के साथ आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होना तय है। Number two, programming skills. Use your phone, use your program, use your laptop. If you want to be a part of the future, you have to live with the future. Anywhere I go in the world, even on stage, I hold my phone. Because my phone is my future. My phone is my present. My phone is my business. I don't need to be in a location. I don't need to sit in Australia. I don't need to sit in Dubai. I can sit in India and make money from my phone. तो दूसरी बात, अगर आपको वक्त से पैसा कमाना है तो वक्त के साथ चलना पड़ेगा। आपको अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा।
आपको टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा। आज मैं दुनिया में कहीं पे भी हूँ, मुझे किसी फिजिकल लोकेशन की जरूरत नहीं है। मैं केवल अपने फोन और अपने लैपटॉप का यूज करके दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के पैसा कमा सकती हूँ, और ये काम आप भी कर सकते हैं। Now, number 3, how do we join a community? We don't need to join a community. Look at the community you've already created. Your community is here. आपकी कम्युनिटी यहाँ पे, एक जोरदार ताली। I've been in the industry since 2018, so almost 6 years now. And in 6 years, I've never seen a community as strong as Metha. This is the reason I'm here today, because of each and every single one of you. So your community is here. Your community has been built with 2 million users already. 2 million users. We built in the last 3 years to 2 million users. But in the next 3 years, we want to be 10 million users. We want to be 50 million users. We want to be 100 million users, because there's 8 billion people in this world that are living today. If we take 10% or 15% of them, we've created success for each and every single one of us. मैंने अक्रॉस द वर्ल्ड ट्रैवल किया है। 2018 से मैं इस इंडस्ट्री में हूं। मैंने बहुत सारी कंपनीज को देखा है, मगर आज तक एक भी ऐसी कम्युनिटी नहीं देखने को मिली जो आपके जैसी है। और आज हमने अपनी स्ट्रेंथ ऑलरेडी प्रूव कर दी है। हम 25 लाख से ज्यादा की कम्युनिटी हो चुके हैं, मगर अभी रुकना नहीं है। 8,000 करोड़ लोग दुनिया में हैं। अगले 3 सालों में हमने 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ लोगों तक जाना है, क्योंकि उसके बाद भी अगर हम दुनिया का केवल 10% लोग देखें, वो भी 800 करोड़ होता है। और जितनी स्ट्रॉन्ग हमारी कम्युनिटी होगी, उतना स्ट्रॉन्ग हमारा भविष्य होगा। Now, before I close my speech, it's been wonderful actually, but before I close my speech, I just want to share some things with you. I did say again that Metha has created something that I haven't seen anywhere else, and I've been in the industry for a very long time. Metha has created a project that's set to make billions and make your life change for the better. Not just your life, each and every single one of you, and you can see this here today. अब इससे पहले कि मैं इस स्पीच को मुकम्मल करूं, आखिर तक लेके जाऊं, समापन पे लेके जाऊं, मैं आपको बताना चाहती हूं कि मीथा वो कम्युनिटी है जो कि ना सिर्फ आपका भविष्य बनाएगी, बल्कि आपके जरिए आप अपनी अपनी कम्युनिटी के अपने लोगों का भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। और मीटर जैसी अपॉर्चुनिटी, मीटर जैसा मौका, मीटर जैसी कम्युनिटी दोबारा आपको मिलने वाली नहीं है। Metha has set a metaverse, so we built our own metaverse. It's set to launch in Q2 of 2024. Metha has created the WEB3.O, an AI academy, meaning you don't need to go out and explore to do research and knowledge. We've built an academy which will be launched as well next year that allows you to learn for free. So you can go out to your website and actually learn and expand your network with just artificial intelligence. And this is all coming in the next quarter. So what this means for you is you don't need to look at your neighbor, you don't need to look at your leader. You can look at the screen, learn, and then earn. Actually, learn and earn together, because Metha is delivering these strategies for free. मीटर अपना मेटावर्स लेके आ रहा है, मीटर अपनी एकेडमी लेके आ रहा है, जिसके जरिए आप सीख कर अर्न कर सकते हैं। आपको ना अपने ऊपर देखने की जरूरत पड़ेगी, ना अपने दाएं बाएं देखने की जरूरत पड़ेगी। आप मीटर से फ्री ऑफ कॉस्ट एआई और वेब3 से जुड़े हुए कोर्सेज को पढ़ के अपने लिए ना सिर्फ लर्निंग ले सकते हैं,
बल्कि उस लर्निंग के जरिए आप अपने लिए अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, एंड दैट इज टू कंप्लीटली फ्री। Now, most importantly, we've also, as you can see through Mr. Denise, he launched a very, very, very high valuable product. The product that you just saw that was launched is a product that's a global product on a global scale, and people of high net worth will be very interested and will be purchasing these products. So the products that Meeth is coming up with and is under development at the moment is products that are going to change your life, because everyone is of high interest in these products. So Meetha has created an ecosystem that is set for you to make millions. But there's only one thing that will stop you. मीथर ने एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट किया, आपने देखा भी होगा डेनिस सर की पीपीटी में, प्रेजेंटेशन में, कि मीथर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स लेके आ रही है, हाई नेटवर्थ प्रोडक्ट्स लेके आ रही है, मेजर कंपनीज के साथ कोलैबोरेट कर रही है, और एक ऐसे इकोसिस्टम को बिल्ड कर रही है जिसके अंदर क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। मीथर एक ऐसे इकोसिस्टम को बिल्ड कर रही है जिसके जरिए आप अपनी कम्युनिटी को बिल्ड करते हुए मिलियंस कमा सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, मगर केवल एक चीज आपको रोक पाएगी, और वो है There's only one thing that will stop you. You. आप खुद। आपको अगर कोई रोकेगा तो आप खुद को रोकेंगे, बस। Only you will stop you, because they built a $1 billion platform and we're waiting to go there all together. केवल आप अपनी कामयाबी का रोड़ा बनेंगे, क्योंकि मीथर ने वो रास्ता, वो ट्रैक, वो प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया है, पर उस पर चलना आपको है, ये आपको है, ये आपको है, और ये आपको है। Now, this is the most important part. I want you to take out your phone, or if you have a pen and paper, take it out. मैं चाहती हूँ आप अपना फोन निकालें, या अगर आपके पास पेन या पेपर है तो वो ले लीजिए, नहीं तो अपना फोन बाहर ले लीजिए अपने हाथ में। And I want you to ask yourself a question. And I want you to write down the question now. We'll take 1 minute before I go off stage. और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप उस सवाल को लिखें और उस पर विचार करें। मैं आपसे एक सवाल पूछने वाली हूँ। I want you to ask yourself why you are building Meetha, or why you got started in Meetha. मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्यों आप मीथर को बिल्ड कर रहे हैं, क्यों आप मीथर के साथ हैं, ये सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ। You need to answer this. आपको मुझे इस बात का जवाब देना है। Why you are building Meetha? It's something called your burning desire. So it's not something that you just think about, oh, I just built Meetha because I just wanted to build Meetha. It's something that wakes me up every single morning and says, I need to build Meetha because something in me says that I need to. This is your reason why. So take a minute. If you don't have time to do it now, ensure that you do this tonight. Take a minute to write down why you got started with Meetha. If you haven't got started with Meetha, take a minute to write down why you will get started with Meetha. And if you already made millions in Meetha, it's time to make more millions. Add a few more zeros to that. So whichever level we are, whether we're here, or we're here, starter, in the middle, or advanced, whatever level we are taking Meetha to the next level. Meetha next year is anticipated to reach $10. And I'm sorry to head office for saying it on stage, but this is the future and this is where we're going. So from now to a year, Meetha will be worth a lot of money. We are Meetha.
मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मैं मीथर क्यों बिल्ड कर रही हूँ। क्योंकि मीथर के लिए मेरे मन में एक बर्निंग डिजायर है जो मुझे सोने नहीं देती, जो मुझे भूखा रहने के लिए इंस्पायर करती है और कहती है लेट्स बिल्ड मीथर। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप मीथर को क्यों कर रहे हैं। अगर आपने जस्ट मीथर को स्टार्ट किया है तो बताइए आपकी वो बर्निंग डिजायर क्या है। अगर आपने अभी तक मीटर को स्टार्ट नहीं किया है तो पूछिए कि आपने मीटर क्यों करना है। और अगर आप अभी तक मीटर से काफी पैसा कमा चुके हैं, मिलियंस कमा चुके हैं, तो तैयार हो जाइए बहुत सारे और मिलियंस को जोड़ने के लिए, क्योंकि मीटर अगले 1 साल में बहुत ऊपर जाने वाला है, बहुत ऊपर जाने वाला है। We are Mesa. We are Mesa. We are Mesa. We are Mesa. Say we are Mesa. Say behind me, say we are, and we will say you say Meter, 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 Meter. Stand up. खड़े होके We are. We are. We are. M coin. M coin. future, M coin. future. Beautiful. Thank you guys. Thank you so much. Thank you. Give yourself a big round of applause.